starting statistics 1 today. And the first topic we're doing is cumulative frequency. Here's the first question. Let's see what it says. Okay. The weight X kilogram of 144 people were recorded. The results are summarized in cumulative frequency table below. So we're already given a cumulative frequency table. It's not always the case. Frequency table given होता है वो histogram वाला और उससे आपको cumulative frequency table बनाना होता है. But in this question, you're already given the cumulative frequency table. On the grid, draw the graph of the cumulative, draw a cumulative frequency graph to represent this result. तो अब इसमें scale आपने खुद लेना होता है. A very, very important thing that you need to do is label the x-axis and the y-axis. If you don't do that, you lose 1 mark. क्योंकि cumulative frequency में marking scheme में पहली चीज लिखी होती है correctly labeled axis. So x-axis पे there's going to be, what was that? The weight in kilograms. So we write that. Weight in kilograms. And y-axis पे it's the cumulative frequency. So you write that. So write cumulative frequency here. Cumulative frequency. Okay. If you don't do this, you won't get the first mark. Okay. अब इन points को plot करते हैं. First point is 40,0. 40 to 90 जाना है. So 40 यहाँ पे zigzag बना के let's start with 40 and इसको 50, 60, 70, 80 and 90. And on the y-axis, we need to go till 144. Okay, so 10 units per centimeter. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Okay, scale decide कर लिया हमने. Scale ऐसा होना चाहिए कि at least 1/3 of the graph covered होगा. नहीं, not 1/3, 2/3 of the graph covered होगा. Okay. So the first point is 40,0. So this is the first point. The second point is 50,12. This is 10 and 12 would be one box above it. Next is 60,34. So 60 is here. 10, 20, 30 and 30 say 2 boxes equal would be 34. Next is 65,64. So 65 is here and this is 50. 60 and 64 would be 2 boxes above 60. Then 70,92. 70 इधर आ गया, 90, 50, 60, 70, 80, 90 and 92 would be 1 box above 90. And then there is 90,144. 80 पे नहीं है कुछ. 90,144. So 90 is here and 144. 100, 110, 20, 30, 40 and 4 boxes above it. I mean 2 boxes above it. Yeah, 144. अब इसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे.
तो ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। "64 people weigh more than C kg. Use your graph to find C." Okay. आप दोनों के पास प्रिंट आउट है इसका या नहीं? मेरे पास नहीं है अभी। ओके, अदन आपके मेरे पास नहीं नहीं है? नहीं है। ओके चलो ठीक है, तो फिर ये पार्ट यहाँ तक तो समझ आ गया, राइट? क्या करना है पार्ट 2 में? अब it says 64 people weigh more than C kgs. ओके, तो मोर देन को ना लेस देन में चेंज करना होता है, बिकॉज ये जो सारा ग्राफ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये हम हमेशा लेस देन के लिए प्लॉट करते हैं। सो जो ग्राफ से आप वैल्यू रीड करते हो ना, वो लेस देन की वैल्यू रीड होती है। सो यू कैन चेंज द क्वेश्चन टू, if 64 people weigh more than C kg, then how many people weigh less than C kg? Dash people weigh less than C kgs. क्या होगा इसका आंसर? टोटल हाउ मेनी पीपल डू वी हैव इन दिस क्वेश्चन? Can you read the question and tell me कि टोटल कितने लोग हैं सर्वे में? 144। हाँ, तो अगर 64 people weigh more than C, then how many weigh less than C? 80। 144 minus 64, 80। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन चेंज कर लिया, मतलब चेंज नहीं कर लिया, रीफ्रेस कर लिया। 80 कैसे आया? 144 minus 64, 80 people weigh less than 60 kgs। तो अब हम इसको रीड करेंगे ग्राफ से। सो 80 people इधर है, 50 60 70 80, और लेस देन C इधर आ जाए। C is the weight, so this would be C। क्या वैल्यू आ रही है? रफली आ रही है 65 66 67 आ रही है इस ग्राफ के लिए जो मैंने बनाया। ये इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि मैंने ग्राफ इतना स्मूथ नहीं बनता स्क्रीन पे, बट लेट मी चेक द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सिक्सटी सेवन लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एनी वैल्यू between 67 and 68. So yes, 67 is fine. Okay. So पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 जैसे क्वेश्चंस आपने जीसी ओ लेवल्स में भी काफी देखे होंगे। पार्ट 3 है कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट्स। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है? मीन तो नहीं निकलता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के जो मिडिल से हम फाइंड करते थे, दैट इज द मीडियन। मीडियन नहीं पूछा उन्होंने, मीन पूछा। अब मीन के लिए क्या करते हैं? मीन का चैप्टर अलग से भी आएगा, बट वी नीड टू डिस्कस इट हियर एज वेल। मीन के लिए क्या करते हैं कि हम ना फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो पार्ट 3 फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का। चाहिए यहाँ पे इधर वेट और नीचे फ्रीक्वेंसी। वेट इज x kg और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ओके, सो अब जिस तरह से हिस्टोग्राम का टेबल बनता है ना, उस तरह का हम टेबल बनाएंगे। x is between something and something, x is between something and something, and so on. So just give me a second to confirm something.
ओके, सो मिनिमम वेट इधर क्या है 0 और इधर the weight is 40. So how many people weigh between 0 and 40? बता सकते हो? 40 से कम 0 people है. So this would be 0. Then how many people weigh between 40 to 50? What's going to be the answer? 12. Yes. Then how many people weigh between 50 to 60? इसका आंसर क्या होगा? 24. कैसे? 34 minus 12. 22, sorry. हाँ 22. ठीक है, सबट्रैक्ट कर दिया इसको इससे. अदन ये बात समझ आई? जी मिस. तो ये भी आप लोगों ने ओ लेवल्स में किया हुआ. ओके, नेक्स्ट आ गया 60 to 65. अच्छा अब जगह कम है सो मैं बस इस तरह लिख रही हूँ 60 to 65, उसके बाद 65 to 70 और उसके बाद 70 to 90. चलिए 60 to 65 के बीच में आ गया 64 minus 34 which is 30. 65 to 70 के बीच में आ गया 92 minus 64 28 और 90 to 70 के बीच में आ गया 144 minus 92 which is 52. I'll quickly add all these up और मेरा आंसर आना चाहिए 144. That's going to be a confirmation के I did not mess up while making the table. 30 28 52. सारी frequencies को add करो तो we do get 144. Okay. अब आपने ओ लेवल्स में इसका मीन निकालना सीखा हुआ है. याद है कैसे मीन निकलता था? फ्रीक्वेंसी टेबल से. इसे मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे हम. फ्रीक्वेंसी को, हाँ. मीन के लिए गिव मी द मिड वैल्यू ऑफ 0 and 40. 20. तो 20 times 0 plus 45 times 12 plus 55 times 22 plus 62.5 times 30 plus 67.5 times 28 plus 80 times 52. और डिवाइड किससे करते थे? टोटल नंबर से. हाँ, टोटल फ्रीक्वेंसी से 144. दिस वुड बी द मीन. लेट मी कंफर्म इट. मार्किंग स्कीम का आंसर कॉपी कर रही हूँ जस्ट टू सी कि हमने सही किया. ओके, इट सेज 45 into 12. ठीक है, 55 into 22, 62.5 into 30, 67.5 into 28 plus 80 into 52 whole divided by 144. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 67.2 आ जाएगा. दैट इज द मीन. अच्छा, इसी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को भी कहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर है तो अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालते, बट उसका उसका भी जिस तरह ये मीन का एक फॉर्मूला है बिल्कुल उससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है और इसी टेबल से वो वैल्यूज आ जाती है. मिड पॉइंट ही यूज होता है बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट एंड विल टॉक अबाउट दैट होपफुली नेक्स्ट वीक. So we're not doing standard deviation right now. Let's move on to the next question. So इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने ओ लेवल्स में ना किया.